So, Dr. Prashant is a brand creator, communication strategist, and a digital marketing specialist, and spent 2 decades wisely but not evenly across startups, consumer marketing, and advertising. His professional life has a blend of corporate and creative worlds, has built and nurtured powerful global and Indian brands that have won consumer confidence and delivered outstanding business results. He is excited by chaos and the ever changing human behavior. He started his career as an ad writer, turned to a visiting faculty with a management school, and is an urban hermit in the making. He has this strong urge to inspire minds and brand towards creative, forward thinking digital marketing ideas. Please welcome Dr. Prashant to present today's value edition. Thank you very much. So, how far have we come यूं ही साथ चलते चलते is something that we all as networkers would have realized. See, when it comes to networking, अब सब सभी जने networking के अंदर हैं और join किया हमने. How do you actually look into leveraging when you join a network or a networking business networking group is something that we will talk about today, and these are very few points that I am making. It's a deeper issue, and there will be more points to this, but for now what I feel are important is something that I'm sharing with you guys. So जैसा आपने कॉस्मोस को देखा हुआ है, networking is almost like the universe that we have, which has multiple stars. Every one of us is a star of its own, and therefore, can you please change the slide? So जैसे ही आप networking में आते हैं, the first thing that, or one of the things that you should keep yourself open to is to collaborate. जितने भी medium to large size businesses, and even for that matter small businesses, today in the current scenario, in the current times that we are in, collaboration is the biggest way forward to growth. And when you come to a networking group, business group, the first thing that you should, or one of the things that you should keep yourself open and be actively looking out, should be about collaborating. This will bring the cost downs and overall cost down, to offer something, a value proposition to your client, and you will become extremely competitive in the given scenario. Next slide please. Now, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम सब सितारे हैं. आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, और over the period of my 40-45 years that I have spent on this planet, revolved around so many years on this planet around the sun, what I have realized is the most difficult task on this planet is to have your own business. And therefore, a big salute to all of you in that sense, that you have the courage and grit and patience to continue your businesses, and therefore you guys are almost like a star. And since that is the case, there is always an opportunity to connect and grow with each of. अब अगर आप अकेले सितारे पूरे, जैसे कि आसमान में इतने सारे सितारे हैं, आप भी अगर उनमें से एक सितारे हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही सप्तऋष मंडल बन जाता है, वो 7 सितारे जब एक साथ जुड़ जाते हैं या एक कॉम्बिनेशन के अंदर आप उसको देखना शुरू कर देते हैं, तो वो कितने पावरफुल हो जाते हैं कि लोगों की डेस्टिनी, एंड यू नो हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स. सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने ऑर्बिट को डिसाइड करना है कि आप स्ट्रेटेजिकली किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले हैं. जैसे प्लैनेट है, मून अपने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, अर्थ एक अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है.
इतनी सिग्निफिकेंट चीजें हैं जो मतलब जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स एंड लाइफ इज देयर ऑन द प्लैनेट, दे हैव अ चार्टर्ड पाथ. Similarly, when it comes to networking, you need to strategically decide your networking orbit. Second point, which is more of an insight, this is more of a personal insight, and we can obviously have discussion on this. What I feel is that नेटवर्किंग के अंदर आप शुरू में आके सब जनों से मिल सकते हैं. Obviously, you need to go and meet and be visible, etc., to the number of people there, possibly in the chapter or in the group. What I feel is that once you go deeper, तो अगर आपने 4 लोग आइडेंटिफाई किए अपने रेलेवेंसी के हिसाब से, अगर आप 1 to 1 उन 4 लोगों के साथ या एक ही बंदे के साथ अगर आप 10 बार 1 to 1 करते हैं, when you go deeper with that person, that is what is going to create a greater possibility of having a constructive and a meaningful business networking possibility. Next slide, please. जैसे ही आप ये अपना 1 to 1 डीपर 1 to 1 करना शुरू करते हैं किसी इंसान के साथ, किसी भी जेंटलमैन और लेडी के साथ, इन द रेलेवेंसी दैट यू फील, you have to create one more of yourself in that person. That person should start talking and knowing you so well from the business standpoint that he becomes almost like your being. जैसे मैं अपने बिजनेस को प्रेजेंट करूंगा किसी क्लाइंट के सामने, वैसे ही if you are able to create such me in others, they will then start projecting or talking about you the way you would want to talk about in front of the other clients. That's important. And how you can achieve this is something that the next slide I'll try and address in this. See, अगर आप की रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं है, इफ यू आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स रिस्पेक्ट इन द ग्रुप, profitability will not happen. So respectability equals to profitability. जितनी आपकी रिस्पेक्ट होगी उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी. अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं पहले दिन से, then there is a very little chance that you will be seen as कि ये कुछ एक्सट्रैक्ट करने आया है बंदा, ये कुछ लेने के लिए आया है, यहाँ देने के लिए नहीं आया. द मोमेंट यू स्टार्ट शोइंग दैट यू आर हियर टू कंट्रीब्यूट, दैट्स वन. ऑब्वियसली अगर आप इस स्लाइड के नीचे चीज देखेंगे तो एक है कि आप कितने विजिबल हैं, how visible you are, and there are not necessarily that you have to be all over the place, that you are shouting and screaming. मतलब shouting and screaming तो हम में से कोई नहीं करेगा, पर मतलब too much outward is not only visibility. Visibility can be that you are present on time, you are presentable, you are always uh, appearing in a certain way, you're talking, you're cordial with people. That is all is part of visibility. सिर्फ दिखना मतलब don't go literal by the term visibility. It is about how you meet and greet people. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अच्छे इंसान भी हैं, मतलब आप पहले तो मतलब आप लोगों से अच्छे से मिल रहे हैं, ऑल दैट इज फाइन. अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर आपको अपना काम नहीं आता है, तो अच्छा इंसान होने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा. आपकी कॉम्पिटेंसी पता होनी चाहिए. आप मतलब आप यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट एंड यू नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट योर कॉम्पिटेंसी. तो विजिबिलिटी and competency has to be visible along with you, not necessarily the physical you. Physical you is important because, as we say, your first impression is the last impression and all those kind of things. But
प्लीज डेमोन्स्ट्रेट एंड मेक योर कॉम्पिटेंसी विजिबल। इसके साथ साथ अगर आप जेनरस नहीं है, generosity is very important. How do you help people? How do you just go out of your way to make someone um, achieve something? The moment you take people together in making them achieve their goals, they will start respecting you. Your credibility will transform into respectability. आप credible हो जाएंगे कॉम्पिटेंस, विजिबिलिटी और जेनरोसिटी के साथ। जैसे जेनरोसिटी से आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो रिस्पेक्टेबिलिटी में कन्वर्ट होती है। So therefore, your generosity plays an important role. Next slide, please. Yeah, don't play within the room. You don't have to sell yourself for the room. Well, obviously, since there are people in the room, you will have to connect with them. Every individual, every person who is in the networking group has a further network. एक उसका छोटा नेटवर्क होता है, एक उसके बाद दूसरा नेटवर्क होता है, और फिर एक टर्शरी नेटवर्क होता है जहां पर वो कनेक्ट आपको अपने किसी कनेक्शन से कनेक्ट कराता है। पहला 500 लोग जो आपके फोन के अंदर होते हैं, एक इंडिविजुअल का 500 से 1000 का ग्रुप होता है। तो सबसे पहले वो आप, अगर आप रूम के अंदर ही अपने आप को सेल करते रहेंगे, योर एम शुड बी हाउ डू आई मेक दिस इंडिविजुअल मेक यू पेनिट्रेट हिज नेटवर्क। जितने लोगों को वो जानता है उसके लिए आपके पास रिस्पेक्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं है, वो आपको रेफर नहीं करेगा किसी से आगे जाके। और जब आपने उसे रेफर किया उस बंदे ने, क्योंकि उसने अपना नाम आपके नाम के साथ जोड़ा है, ही विल बी वेरी कॉशियस, बिकॉज अगर आपने कुछ गड़बड़ किया, हिज इक्विटी गेट्स इरोडेड। आप तो जो करोगे वो करोगे, उसका नाम खराब हो रहा है उसके साथ। तो वो बंदा कभी भी आपको, जब तक आप उसके जोन में नहीं आए हैं, मतलब रेस्पेक्टेबिलिटी वाले जोन में नहीं आए हैं, क्रेडिबिलिटी के साथ साथ, वो आपको आगे नहीं रेफर करेगा। सो प्लीज डू नॉट जस्ट सेल विद इन द रूम, go beyond. Thank you very much, guys, for being so patient.